Hello, friends, a very warm welcome. And we are taking up here two essays, like the way we had taken up in the previous series also, and try to see that what elements, as per our curriculum and as per the course, and on the top of it, the kind of ideas that we have even discussed in our book, the step by step manual for essay writing, which you can also purchase, and the link is given in the description box. I request Mansi to put that link. So let's go for the understanding of the topic. Forest precedes civilizations and desert follow them. So this is a kind of not a proclamation. This is a kind of a philosophical come empirical statement that if we are not going to take care of our civilization in a right and sustainable way, then we are going to suffer for it. So there's the saying is an indicator to the nature of expansion and its ecological impact of nature, climate, and biodiversity. So the setting is there in the first paragraph, which is actually bringing the natural aspect of it. But the key word here is forest, civilizations, and deserts. So the first paragraph is giving indication about forests, about deserts, but the civilization word we will see whether it is coming up or not. But Anthropocene epoch is a reflector of imbalance in natural ecosystem, which has hampered the natural state of replenishment of ecosystem services. Is a very good point, and it is in sync with the title. But let's see how it is coming up. It has thus proved to accelerate the climate change, further destroying the nature, as seen through increased rate of retreating glaciers, land desertification, and soil acidification. The beginning of human civilization. Wow, that's a very good start over here. So I think essay suddenly becomes more meaningful. Stone Age had dense forest with discovery of fire, standard living improved, hunting, gathering, eased, and wood was used as fuel. Forest clearing expanded and combined with shifting agriculture. Gradually, as the population grew, the second stage of evolution emerged. More advanced urban civilization tend to increase demands for clear land. So very good clarity, very good simplicity, very good flow. One story is being taken up. Forest cleared towards eastern India near the Indus River and its tributary. The economy prospered with the trade and exchange, agriculture, food security with certain civilization, food grain like wheat, barley, and rice. It is believed, according to Rakhal Das Banerjee and Dayaram Sahani, that flood due to climate change and earthquake brought the civilization to an end. So definitely it is correct, but both the names are actually they are not saying so. They both were responsible for excavation. Dayaram Sahani and Rakhal Das Banerjee, they are linked with Harappa and Mohenjo-daro. They are founding their excavation. They are not the one who propounded the theories, but that's fine. That is not a problem. I think it is taken in a positive spirit, but then I'm just sharing. Death due to starvation occurred and indicates excessive interference of human activity resulted in unproductive, fallow, and desert land which was once flourishing. So I think very good story till now, very good clarity. It is a theory of ecological succession that the pioneer species began with the huh? What is this? Mutation, first stage of ecological Okay. succession. The P was actually linked with that. Nudation, invasion, competition, reaction, and climax as different stages of living in a civilization. As it is said, according to the third law of motion, that each action has its equal and opposite. Nature follows who follows. Nothing can overpower the force of nature, and it is indicated by several times by it. So I think very confidently it is put up. So I think that's fine, taken up positively. For example, Kedarnath floods in 2013 in Uttarakhand was a result of excessive construction in the hilly terrain going beyond the natural capacity of the ecosystem. It disturbed the ecological balance, deforestation, cutting the steep rocky mountains to build roads and building hydroelectric projects. This gave birth to the environment impact assessment and environment protection movements spearheaded by civil society organizations. Sustainable development is the ideal way and trajectory of going, ensuring welfare of all in a qualitative manner. Apart from the motive of materialistic gains, it is also synced with the Gandhi's idea there is enough for everyone's need and not greed. Fair and balanced growth allows the nature to replenish itself in steady manner in its own. This was visible during the lockdown COVID-19 time when Ganga became crystal blue, biodiversity multiplied, and air quality improved. It was a big reminder to humanity and the government that the few challenges are created by we humans, and solution is not in spending money but respecting the law of nature in a diligent manner, which requires behavioral and attitudinal changes. It is not complied. If it is not complied with, then we are headed towards a desert in a certain manner. The reality is very simple, but it has been complicated through unwanted human desires, urge of countries to become rich and richer wanted to be at the top, but the realization with the impact of climate change, 1 degree rise in temperature and already changing rainfall, accelerated ocean rising, animal conflicts, glacier outbursts, floods, and the list goes on, have led to increased global cooperative and policy shift towards sustainability. The transition from Millennium Development Goals to Sustainable Development by 2030 under the Paris Climate Agreement 2015, along with the periodic assessment at Conference of Parties 20 COP15 is an example. However, it is marred with several challenges affecting implementation
like dispute in climate finance, energy concerns, and greenwashing. India has initiated international solar alliance on World One Sun One Grid initiative and Global Biofuel Alliance. Panchamrit climate targets some similar policy changes like green regulators coming into existence as National Green Tribunal, Central Pollution Control Board, and the Green Credit Renewable Purchase Obligation, Kampa Fund, a few of them. Behavioral change campaigns such as Swachh Bharat Mission, Extended Product Responsibility, ban on single-use plastic, Earth are introduced every year, focus on increased participation by citizens. Sustainable alternate fuels like renewable solar and wind energy, biofuel, fuel cell, lithium-ion battery, biogas offers solution to achieve the carbon neutrality target by 2070 and minimize the use of fossil like coal. Thus, we have the solutions, but their efficacy will be determined by the urgency of the effective implementation and adaptation in daily behavior. Therefore, through all these measures, we will decide the window of human existence in coming decades and how far we can delay the creation of negative of future. So I think that is done. I think for one is done. So we can think as far as first is concerned that it is reflecting a very good flow. The ideas are very good, and there is definitely empirical and rational ideas in between. It is having philosophical tone also. It can be a little bit more innovative and light-hearted if you just bring, for example, certain literature name, for example, certain magazines name, only one, but not in a report kind manner. For example, when we are saying it precedes, so you argue somewhere in between also once or twice that how how forest, civilization, and desert this triad had been successful also one or twice. You can just mention in between Harappan civilization. You said it didn't flourish, but after that, whatever culture came to India, it flourished. So you could have just even wherever you are even talking about like India is taking so many steps, but then you can say even in ancient India, such kind of thinking was visible. Or you can give example of Amazon forest. So rather than writing so many examples and so many facts, you create one big picture, one big example. Somewhere in between, so it is fine. It is a good effort, but then it will become more innovative. So from innovative perspective, it is innovative only because otherwise it is very logical, very scientific. But then from innovative perspective, फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि कैसे राजस्थान में हमने बावड़ियां और हमने तालाब वापस ले लिए हैं, जी सर। मतलब छोटा मोटा कम्युनिटी वाले एग्जाम्पल हाँ जी। छोटे, फिर आप दो चार बात कम भी बोलोगे, हाँ जैसे एनर्जी पॉइंट भी है, तो हमने ग्रीन एनर्जी बनाई है और ग्रीन एनर्जी को हम सस्टेनेबल भी करने की बात करते हैं। हम्म, मतलब थोड़ा सा रुकना है हल्का सा और फिलोसफिकल हल्का सा हो, मतलब थॉट लेके आना, हाँ जी हाँ। थोड़ा सा थॉट और आते ही वो काम हो गया। बाकी तुम बताओ दीदी, क्या कहना है? जी सर, जैसे जो ट्राइबल्स में हमने देखा था जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पेड़ उगाने के लिए लगा दी, उनको पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, उनका नाम लाए जा सकते। बाकी वो सारा फ्लो के अंदर पढ़ा जा रहा था, वो काफी अच्छा था। नहीं सही है, पर वो हम्म, ये कि जो इनोवेटिवनेस आएगी, जैसे पद्मश्री का नाम आ गया था सोच करो, या फिर गणपति विसर्जन की हम बात कर रहे हैं, जैसे हाँ जी हाँ। विसर्जन जब हम कर रहे हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल लेक में कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको बायोडिग्रेडेबल भी कर रहे हैं। हाँ जी। छोटा सा स्टेप है, लेकिन हम सिविलाइजेशन से हम डेजर्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। हम्म, वो हमें नहीं लेके जाएगा, ऐसा कर दो, तोड़ो ठीक है थोड़ा सर। सा और हाँ तोड़ो। आपको कुछ कहना है सचिन? सिविलाइजेशन, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट तीनों को हम्म, एक साथ लेके भी कैसे चल सकते हैं सर, उस बारे में थोड़ा तोड़ सकते हैं चीजों को, हाँ ये बात एक तो सही influence डाल सकते हाँ हाँ, एक कहीं ना कहीं तो आ ही सकता है, सही बात है। पर हम्म, ये भी मतलब पॉइंट ये, जो भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो भी आपको रफ वर्क करना है, उसमें सब होना चाहिए। तो ये भी सही था, ये मॉडल मतलब देखते हैं अभी सेकंड के बाद कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मॉडल ठीक था, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा इनोवेटिव हो सकता है बस। हाँ जी। इनोवेटिव हो गया, छोटे छोटे एग्जाम्पल कोई हो गया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम्म, वंगारी मथाई, जिनको नोबेल प्राइज भी कीमिया का मिला था, वंगारी मथाई उनका नाम है।
जैसे हाँ जी। आपने आज सुबह ही बोला था कि भाई सिर्फ 30,000 कितने रह गए हैं राइनो, और 20वीं सेंचुरी के शुरू में जो है 3 लाख थे। हाँ जी। राइनो भी है, और इंडिया वाला राइनो तो है ही, 3,000 राइनो इंडिया में ही है मेरे ख्याल से। हम्म। और सुमात्रा में भी राइनो है, अफ्रीका में भी राइनो, व्हाइट राइनो है इंडेंजर्ड। हाँ जी। बस। तो वो जो सिविलाइजेशन है, मतलब वो सिविलाइजेशन क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन एंथ्रोपोजेन जैसे वो वाली सिविलाइजेशन हो गई ना। सिर्फ हम्म। राइनो नहीं है, हाँ जी। हाँ। गाँव भी होंगे, ट्राइबल भी होंगे ना। हाँ जी। आप एक भी चीज लेके बताओगे, कूनो चीता आ गए, यहाँ पे चीता बच रहे हैं, हम्म। बचा गए। डेजर्ट को आप मेटाफर में ले सकते हो। हम्म। डेजर्ट का मतलब सिर्फ डेजर्ट नहीं है। हाँ जी। जी सर। डेजर्ट तो तरीका है। आप हम्म। लिखो भैया ओवर कंज्यूमरिज्म कर दिया और 10 मिनट की डिलीवरी तो कर दी, लेकिन 10 मिनट में आप दवाई नहीं पहुंचा पाए, हम्म। ट्रेटेड हो गया, तो डेजर्ट। हाँ जी। बस ये वाला लेवल। हाँ सर, हाँ ठीक है। So the empires of the future will be the empires of the mind. Wow, that's a good topic. The saying can be traced even in historical times in such a way that empires of mind and human curiosity led to discovery of fire. Well, this is a good beginning and wheel during the Stone Age. It's a very good example. The advancements got transformed with more complexity, quality, and standard with time that it has taken the shape of quantum computing, artificial intelligence, and distribution, and what not. तो what not लिख के सफलता मिल गई, नहीं तो ये भारी हो जाता। हम्म। All this is possible because of human cognitive skills with constant experimentation, research, and development, giving birth to intellectual property rights in different forms like patent, copyright, trade secret, and industrial design. The journey will continue in the future. Empires of the mind will determine the trajectory, the nature, the form, and the empire of the future. It is like a virtuous cycle, functioning at different layers, like as the mind of a citizen, a policymaker, a homemaker, a scientist, and it, I think, very wonderfully written. At the level of citizen, the determination of the empire of future democracy and its health will function. The mind of a voter will decide the political representative's future win. It is followed by political party, whether with a loyalist, leftist ideology, rightist ideology, will come with a clear majority. As in case of India, the time period between 1990 to 2014 was an era of coalition government, and 2014 to 2020 took the form of single party majority. It was the mind of the voters. Similarly, as policymakers, the nature of the foreign policy takes shape. India supported peaceful cohesion, multilateralism, and peace. The future will see it becoming more dynamic due to multiple opportunities and challenges at the same time. Like the procurement of S-400 air defense system and the US imposed sanctions on other importing nations, the same threat exists for India. The foreign policy is becoming more realist, like India's stand that trade and terrorism cannot go together in case of Pakistan. Thus, it will become more flexible in adoption to the nature of challenges to respect of each neighboring country and non-neighbors. I think fair enough. At homemaker level, as a homemaker, the minds of women determine increase in household saving, education of children, and their own empowerment. Inside the empire of future, it is the forum. It is a form of domestic source of investment, demography, dividend, and consumer spending. I think this is beautifully divided. बहुत अच्छा चल रहा है ये पहले वाले के मुकाबले अगर हम कहें, it is more innovative. Looking at different sectors in economy, like the technological sector, it is developed from internet to Li-Fi to smartphones to LED TV to JSLV rocket logic because of human mind. So you are actually connecting with the topic here more directly. The other areas like generative AI, cloning, gene editing, and blockchain technology developed because of human mind and will also decide its use in future. The debate around ethical, fair, just, transparent use of such invention will determine the empire of future will be see more commercialization and our capitalist tendencies or welfare and human safety as priority at the global level. The empire of mind will determine the empire and future such as sustainable development, equitable benefit sharing, giving due share to global south and multilateralism. The mind of leaders will decide whether humanitarian rights will take supremacy or the desire to concentrate power in the hands of a hegemonic power. For example, rights of Uyghur Muslims was China's leading as Asian country. It is the empire of minds that created nuclear weapons and the same that formulated no first use policy. It is to be seen whether complete nuclear disarmament will be reality and in the empire of future. Now, the human mind today, understanding the seriousness around measures to mitigate and adapt climate change will shape the future and our lives. Will the nations comply with the decided timeline or not? Can we really survive only through renewable sources of energy? Therefore, human mind is the creator and destroyer at the same time and shaping the future, but it is the only force of the power of nature and the supreme God, that is God, also decides the empire of future. Well, it has multiple opinions. The core thing that should matter is the outcome. So I think this was far more, innovative. It was very innovative essay. You have divided it into different groups. That is really, really smart, and you were bringing examples. But here also speed was good. But then again, to bring innovativeness in case of homemaker, for example, you could have uh, you could have brought one example how homemaker in India
You already spoke about that, how they are saving money, how that everything. But homemaker in India as something, one new perspective, a homemaker and enlightened citizen, something like that, जैसे हो भी रहा है। होममेकर अब कोई टैबू नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके में लोग 35 में रिटायर हो रहे हैं, यहाँ 35 में नौकरी भी नहीं मिल रही है। आप समझिए ना बात को। आदमी 5 साल 10 साल काम करके बोल रहा है ट्रैवल ट्रैवल करके एक्सप्लोर कर रहा है। तो हम्म, डिवीजन, लेकिन उन डिविजन्स में अगेन कोई किताब का नाम, हाँ जी कोई सर, किताब का एग्जाम्पल्स आ सकते हैं और illustration, तो वो बस फ्लो करते ही काम हो जाएगा। हम्म, वो क्रिएट कर दो, खुद ही क्रिएट कर दो। हाँ जी। कुछ कुछ भी करो करो। हम्म, बेसिकली मैं, ये जैसे डिवीजन खुद किया, हाँ सिटीजन खुद ही किया था ना ये। हाँ तो सर। इसी से स्कोर किया। हम्म, बस उसके ये अच्छा था कि एम्पायर अच्छा था भाई, कौन रूल करेगा, बड़ा अच्छा था। क्वेश्चन भी पूछ रही हो, मतलब वेरी गुड फ्लो इन इन द सेकंड वन, वेरी फास्ट। इतना ही टाइम लगता है एग्जाम में। हाँ जी। तो दोनों मिला के अगर मैं बात करूं, 250 270 250 मार्क्स में से आई थिंक 120 प्लस तो होना ही चाहिए। हम्म, 125 प्लस, 125 आराम से, मतलब 125 के आसपास आ सकता है, अगर वो जो थोड़े से चेंजेस जो है। हाँ क्योंकि जी। क्या है, क्लास क्लास हाँ, आना चाहिए। पढ़ते टाइम ना, पढ़ते टाइम कुछ होना चाहिए। हम्म, तो हो तो, लेकिन वो अभी वही है कि पानी उबला नहीं है। हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा। पानी उसमें धुआं निकल रहा है। हम्म, पानी उबले 100 डिग्री टेम्परेचर माना जाता है, स्टीम नहीं आ रही है पानी। हाँ जी। स्टीम, वी वांट स्टीम। तो हम्म, स्टीम जब आएगी, जैसे ही वो स्टीम आएगी ना, जैसे होता है ना स्टीम ले ले, हाँ सर। अरे भाई ये स्टीम कहाँ से आएगी? गर्म हो चुका है, हम्म, भाप बन रही है। लेकिन वो भाप इतनी नहीं बनी कि तुम्हें, तुम्हारे चेहरे को वो पूरा, जो ऐसे वो, वी गेट प्रेसिपिटेशन ऑन आवर फेस। जी। बन गई है भाप, लेकिन हम्म, वो भाप वैसे वो हाँ। बनानी है तो थोड़ा सा, हल्का सा 10-20% और ध्यान देना होगा। नो हम्म, नॉनसेंस, नॉन बायस्ड है, नॉन एक्सट्रीम है, वेरी पॉजिटिव है, डिमांडिंग है। It is bringing questions, it is asking for, it is reflecting integrity, it is reflecting non complexity, तो सारे फैक्टर हैं। हाँ जी। ये आप बताइए, दिव्या आप बोलो। जी सर। सर, सेकंड वाला भी अच्छा था, उन्होंने काफी सारे एग्जांपल्स ब्रेक कर कर दिए थे और वो फ्लो में होते पूरे के पूरे एक साथ एक उसमें पढ़े जा रहे थे, काफी अच्छे से चीजें समझ में आ चौंकाओ, रही थी सर। हमें जी तो सर। चौंकाना है। यस सर। तो चौंकाओ तो जब हिम्मत होगी, तो चौंका नहीं जी सर। सकते। यस सर। आप बताइए, खुद बताइए, आपका खुद का क्या व्यू पॉइंट है। दो ऑब्वियसली यू विल रिविजिट इट, बट आपका खुद का व्यू पॉइंट क्या है? तो थोड़ा सा वही और पॉलिश हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लेवल रेज करने में, और फाइन एग्जांपल्स में और इंक्लूड कर सकती हूँ। जैसे थ्योरेटिकल टाइप में अगर स्ट्रक्चर बोलूँ तो वो तो ठीक बन गया है, तो हल्का हम्म। सा उसमें और थोड़ा सा ट्वीक करना है। सही बात है। सचिन, आपको कोई पॉइंट, यू वांट टू रेज सम पॉइंट? सर ये क्वेश्चन है, तो भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, तो बेसिकली साम्राज्य हम्म। स्टेट को लेकर अलग हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लाइक एग्जांपल आप यूट्यूब, तो वहाँ वो भी कर लोगों सकते के हैं, अपने साम्राज्य हैं। हम वो कर सकते तो हैं, वो लोग करेंगे, बल्कि इस तरह से लोग जल्दी करेंगे, इसमें मशीन पे लेके आएंगे, मशीन से ही दिखाने की चाहेंगे। मस्तिष्क का साम्राज्य जैसे न्यूरोलिंक लेके आएगा कोई, लेकिन वो एक इंटरप्रिटेशन है। न्यूरोलिंक ले आया आप, आपने माइंड से सिग्नल करके बल्ब बंद कर दिया, वर्चुअल रियलिटी आ रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रही है, मेटा आ गया है। और ये सब करेंगे, लेकिन आई थिंक वो भी सही है, लेकिन ये भी बहुत सही है, ऐसा नहीं। बट सर इसे तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके उसके साथ तो लिख दिया, लेकिन इसके अगेंस्ट लिखना पड़ेगा। जहाँ तक नहीं जा पाती चीजें, फिर कैसे तो बताया, कर पाएंगे। जैसा कि हमने हमारे एसएमएस में बताया हमने कि भाई कि अगर नहीं होगा तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी, क्या वो खराब हो गया, उसे क्वेश्चन रेज कर दिया। लेकिन कोई साइंटिफिक एंगल से लेगा तो भाई वही बात है, मशीन के आप स्लेव हो जाओगे, सुपर कंप्यूटर्स के आप स्लेव हो जाओगे, क्वांटम कंप्यूटर्स के आप स्लेव हो जाओगे, जैसे अभी हो रहा है। सोशल मीडिया का स्लेव हो गए हो आप ऑलरेडी। हम्म, सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है, कुछ भी बना रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, रील ही रील बना रहे हैं, उनको लाइक चाहिए, उनको पैसा आ रहा है उससे, तो एक अलग पैरेलल वर्ल्ड तैयार हो रहा है मस्तिष्क का। तो आपको वो टॉक्सिक भी कर रहा है। तो आई थिंक ये ओपन ओपन एंडेड है, ये इंटरप्रिटेशन है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, बस जस्टिफाई होना चाहिए।
तो आपका भी ठीक है कहना, और जिन्होंने किया वो नॉन टेक्निकल अप्रोच है, वरना कोई साइंस वाला तो बिल्कुल ले ही आएगा, वो तो मशीन का भी पूरा सुना समझाना लग जाएगा, वो भी स्कोर लाने का एक तरीका है, लेकिन ये भी स्कोर लाने का एक तरीका है, दोनों तरीके हैं. So thank you very much to all of you for the key points, and keep watching and learning and revisit the series so that you can understand the crux and also nuances. And look into the description box for the link so that you can get the manual for your better performance. Thank you very much.